एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, CLRM अजम्पशंस पे हम पहुँचे थे। तीन CLRM अजम्पशंस अपने देख लिए थे। फर्स्ट अजम्पशन जो था, the very first assumption was about linearity of the model, which talks about that parameters are linear. हमने ये कहीं पे तो लिखा था, लेट मी जस्ट चेक। So the first was that we'll not waste time. The app is not opening. So first the linearity of model, that means parameters are linear irrespective whether the variable is linear or not. Parameters should be linear. The second assumption that we saw was that fixed values of x in repeated sampling. And third, we saw that mean value of expected or mean value of error given the x is 0 or 0 mean value of error term given the x. These were the three that we understood in the last video. आज हम आगे के तीन कवर करेंगे. The fourth one assumption is that homoscedasticity or constant variance of mu i. अब होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट, और स्केडास्टिसिटी का मतलब होता है वेरिएंस. तो होमोस्केडास्टिसिटी का मतलब है सेम या कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ म्यू आई. The variance of the error term or the disturbance term is same regardless of the value of x. x की जो भी वैल्यू हो, जो वेरिएंस है, जितना वो वेरी हो रहा है. लेट्स से ये हमने डायग्राम देखा था लास्ट वीडियो में. ये जो म्यू आई है, या ये मीन वैल्यू था, यहाँ से यहाँ तक प्लस म्यू आई है, यहाँ से यहाँ तक माइनस म्यू आई है. ये जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज वेरिएंस इन शॉर्ट. तो ये वेरिएंस जो है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच एक्स वैल्यू वी आर टेकिंग, वो वेरिएंस सेम होना चाहिए, रिड्यूसिंग नहीं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, I draw a diagram which is somewhat like this. मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इंक्रीज होता जा रहा है. विथ टाइम ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है. दैट मीन्स वेरिएंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है विथ increase in x values.
Same if I have another diagram. The variance is reducing. So with the increase in x values, variance is reducing. तो ये सारी सिचुएशन हमें नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x एंड म्यू के बीच में देयर इज सम रिलेशन which we don't want. This is what is being explained over here. Homoscedasticity का मतलब ये होता है. Homoscedasticity हो या पॉइंट का नाम है नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी. हेटेरो का मतलब डिफरेंट. तो no heteroscedasticity means no different variance. It should be the same, constant variance. Variance की value होगी 5, 10. I am not saying variance should be 0. I am saying variance की value हो सकती है, but that term should be a constant term. 5, 10, 15, 20, anything. Variance is written as like this. अगर मेरा x का variance, let's say when I am writing variance of x, it is written as expectation, I'll write it here, expectation of xi minus the expectation of xi the whole square, or expectation of xi square minus expectation of xi the whole square. So ये वेरिएंस की फॉर्मूला होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस. ये वाली फॉर्मूला उन्होंने ली है फॉर म्यू आई. तो x की जगह पर म्यू आई है. वेरिएंस ऑफ म्यू आई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई गिवन एक्स आई द होल स्क्वायर. Because of assumption 3, this term becomes 0, correct? Where हमने पिछले ही वीडियो में देखा था that the third assumption or second or third assumption was that e of, where can I write this, that is e of mu I given xi is equals to 0. तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. So you are left with only e of mu I square given xi. Now this can be written as e of mu I square if xi is non-stochastic. Non-stochastic means अगर x की वैल्यू non-random है. अगर x की वैल्यू non-random है then this will be true. And e of mu given e of mu I square क्या है? It is nothing but the variance sigma square. ये हम derive करेंगे. वो कैसे आएगा हम वो derive करके देखेंगे. For now you just need to understand that the variance of mu I given xi is equals to a constant term which is sigma square. कैसे? Variance of mu I is written as expectation of mu I minus expectation of mu I given xi the whole square. This term is 0. So I am left with e of mu I given xi square which can be written as e of, ये क्योंकि माइनस 0 हो गया, mu I square given xi. मतलब mu I की वैल्यू नहीं, mu I स्क्वायर की वैल्यू हम लेंगे. अब सिंस xi is fixed और non
stochastic. This becomes E of mu I square, which is nothing but sigma square. So this is variance of mu I, that it is sigma square. Sigma square का मतलब it is a constant term. Constant term. कुछ x की वैल्यू इसके साथ दिख रही है? नहीं. अगर x की वैल्यू होती मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x बढ़ेगा तो शायद उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. हम कैसे लिखते हैं? अगर हम कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x तो y इज़ 5x, मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है. x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 इंटू 2 विच इज़ 10 हो जाएगी. तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे यू कैन सी y की वैल्यू बढ़ रही है. बट हमारे केस में योर वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, लेट्स से 5. x इसके साथ है? नहीं है. तो x की वैल्यू 1 होगी तब भी वेरिएंस 5 होगा. x की वैल्यू 2 होगी तब भी वेरिएंस 5 होगा. x की वैल्यू 3, variance is still 5. It is a constant number, is what we are saying by homoscedasticity. Equation 3.2.2 states that variance of mu I for each xi, that is conditional variance of mu I, is some positive constant number equal to sigma square. वो एक पॉजिटिव नंबर है विच इज़ सिग्मा स्क्वायर. पॉजिटिव नंबर का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वेरिएंस है. टेक्निकली इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द अजम्पशन ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी और इक्वल. होमो का मतलब सेम, इक्वल. स्केडास्टिसिटी का मतलब वेरिएंस, स्प्रेड, और इक्वल वेरिएंस. द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड skedanaim, which means dispersed or scattered. Stated differently, the equation means that y populations corresponding to various x values have same variance. उनका जो डिफरेंस है वो सेम है. Put simply, the variation around the regression line, यानी ये रिग्रेशन लाइन है तो उसके आसपास जो वेरिएंस है, दैट वेरिएंस अराउंड द रिग्रेशन लाइन इज सेम अक्रॉस द एक्स वैल्यूज. इट नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस एज एक्स वेरीज. अगर वो एक्स इंक्रीज हो रहा है तो ना ही वो इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है. डायग्रामेटिकली द सिचुएशन इज एज डिपिक्टेड इन फिगर 3.4. दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग. ये देख रही हो, ये जो डिफरेंस है इस लाइन से, ये डिफरेंस सेम है. दिस डिफरेंस शुड बी द सेम. अगर आप आगे हेट्रो वाले सिचुएशन देखो यहाँ पे द डिफरेंस इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. द वेरिएंस इज इंक्रीजिंग विथ द इंक्रीज इन एक्स वैल्यूज. वही अगर आप नहीं है, दूसरा डायग्राम नहीं है. आई विल शो यू द डायग्राम. ये 3 डायमेंशनल फिगर में बनाया गया है. यू कैन ड्रॉ इट इन 2 डायमेंशनल ऑल्सो. यहाँ पे ऐसे रिग्रेशन लाइन है, यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है. तो ये कांस्टेंट वेरिएंस का मतलब है, लेट्स से दिस इज द वेरिएंस, तो वो सेम रहेगा ऑलमोस्ट. व्हेन आई एम सेइंग इंक्रीजिंग तो वो वेरिएंस कुछ इस तरीके से होगा. ये आपका कर्ली ब्रैकेट बढ़ता जाएगा विद द इंक्रीज इन एक्स. व्हेन आई एम सेइंग इट इज डिक्रीजिंग this is decreasing. It can be zigzag as well.
zigzag means कभी increase होता है, कभी decrease होता है. So you can draw these diagrams also to explain your point. In contrast, figure 3.5, where the conditional variance of y population varies with x, the situation is known as appropriately as heteroscedasticity or unequal spread or variance. Symbolically, in this situation, equation can be written as variance is different for I आ गया है. इनमें डिफरेंस क्या है? होमोस्केडास्टिसिटी के टाइम पे इट इज सिग्मा स्क्वायर, अ कांस्टेंट टर्म. हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में इट इज सिग्मा आई स्क्वायर. आई क्या बता रहा है? फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएंस. नोटिस द सबस्क्रिप्ट सिग्मा स्क्वायर इन इक्वेशन 3.2.3 आई, which indicates that the variance of y population is no longer constant. To make the difference between the two situations clear, let y represent weekly consumption expenditure and x weekly income. So x is your income, y is your consumption. Figure 3.4 and 5 show that as income increases, consumption increases. Consumption expenditure increase, तभी regression line is upward sloping. But in figure 3.4, the variance of consumption expenditure remains same at all level. Variance, अगर आपका consumption expenditure में फ़र्क भी आता है तो वो same है. Whereas in figure 3.5 it increases with the increase in income. तो वो जो variance है with the increase in income, वो increase होता जा रहा है variance. ज़्यादा income, higher level of income पे variance ज़्यादा है. In other words, richer family on the average consume more than poorer families, but there is also more variability in consumption expenditure of the former. तो वो क्या कह रहे हैं? Variance increase होना मतलब higher the income level, higher is the variance, higher is the difference. मतलब वो जो vary कर रहा है consumption, कभी कंजम्पशन आप 0 कर रहे हो, कभी कंजम्पशन आप 50 कर रहे हो. तो ऐसे जो वेरी कर रहा है ऑन एवरेज से आप बहुत अलग हो, वो हाई हो जा रहा है. टू अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड दिस अजम्पशन, रेफर टू फिगर 3.5, मतलब वेरियंस इज इंक्रीजिंग. एज द फिगर शोज, वेरियंस ऑफ फर्स्ट इज लेस देन वेरियंस ऑफ द सेकेंड, इज लेस देन वेरियंस ऑफ द थर्ड, इज लेस देन वेरियंस ऑफ द ith term. Therefore, the likelihood is that y observations coming from the population with x equals to x1 would be closer to the PRF than those coming from population corresponding to x equal to x2, x3. मतलब ये जो वैल्यूज होंगे, these values will be somewhat near to the PRF, but these values here and here it may be differing from PRF क्योंकि वो दूर है. In short, not all y values corresponding to the various x's will be equally reliable. सारे y values equally reliable नहीं होते. Reliability being judged by how closely or distantly the y values are distributed around the mean, that is the points on the PRF. If this is in fact the case, would we not prefer to sample from those y population that are closer to their mean than those that are widely spread? देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि जो ऑन एवरेज है, लेट्स से ऑन एवरेज वीकली कंजम्पशन 50 रुपीज़ है, लेकिन देर आर फैमिलीज जो इसके नियर बाई ही है. 3 फैमिलीज यहाँ पे जो 45, 42, 40 कंज्यूम कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेराज देर आर फैमिलीज 51, 53 या 54 कंज्यूम कर रहे हैं. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एंड द थर्ड केस XI के टर्म्स में, तब आपका वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेट्स से 70 है, बिकॉज एक्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है
विद द इंक्रीज इन एक्स वैल्यू वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन एवरेज भी इंक्रीज होगा, 50 से 70 होगा. यहाँ पे इट इज बिकमिंग 20, 30, 35, 45 and here it is 78, 89, 96. डिफरेंस जो है देख रहे हो यहाँ पे, जो गैपिंग है कहाँ 20 और कहाँ 70, वो जो डिफरेंस है, वो जो गैपिंग है वो ज़्यादा है, दैट इज़ वेरिएंस. वेराज 50 के केस में अगर आप देखो तो 40, 42 नियर बाई ही है, 50 के आसपास ही है. ठीक है, तो दैट इज, तो हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे जिसका वेरिएंस कम है. करेक्ट, ये वाला चूज करेंगे, इज व्हाट दे आर सेइंग. बट डूइंग सो माइट रिस्ट्रिक्ट द वेरिएशन वी ऑब्टेन अक्रॉस एक्स वैल्यूज. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसी पॉपुलेशन से या उसी सैम्पल से जिसका वेरिएशन बहुत कम है. By invoking assumption 4, we are saying that at this stage all y values corresponding to various x's are equally important. अगर हम इसको ध्यान में रखें, हर एक जगह पर y वैल्यूज़ जो वेरी हो रहे हैं x वैल्यू से इक्वली इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़, अगर हम इस assumption को ड्रॉप कर दें, हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी का केस कंसिडर करें, so we are saying that yes, every value whether it is too far from the average is important. But homoscedasticity में हम कहते हैं कि सारे values same distance पे होने चाहिए. In passing, note that assumption 4 implies that the conditional variance of yi are also homoscedastic. तो हम इसका मतलब क्या, हमने तो कहा variance of mu I given xi is constant, that is sigma square. But this also means that we are saying the conditional variance of yi are constant. इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो कंडीशनल yi का वेरिएंस है वो भी कांस्टेंट है, दैट इज वेरिएंस of yi given xi is also sigma square, which is a constant term. So whether you say it is variance of mu I given xi or variance of yi given xi, it's the same thing, that it is constant. Of course, the unconditional variance would be sigma square y. Unconditional मतलब सिर्फ y का variance, that would change, but it means it is depending on the y values, but conditional upon x is not changing. Later we will see the importance of distinguishing between conditional and unconditional variance. Later on we will check that conditional variance and unconditional variance क्या होता है. The next point is no autocorrelation between the disturbance, which we will cover in the next video. क्योंकि ये जो assumptions है, जैसे होमोस्केडास्टिसिटी हो गया, और नो ऑटो कोरिलेशन हो गया, मल्टीकोलिनियरिटी हो गया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस. तो इनको अगर मैं सेपरेटली एक एक वीडियो में समझाऊं तो वो बेटर रहेगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन डिस्टर्बेंस टर्म एक्सप्लेन करूँगी. सो टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. डू फॉलो द चैनल, मीनिंग सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मैं आगे जितने भी वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए. आई विल गेट मोटिवेटेड व्हेन यू सब्सक्राइब. वेरी लेस पीपल आर सब्सक्राइबिंग. डू लाइक द वीडियो अगर आपको होमोस्केडास्टिसिटी अच्छे से समझा है, या हेटेरोस्केडास्टिसिटी, नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी अच्छे से समझा है. येस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और फीडबैक, कमेंट आप कर सकते हैं. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट. एंड इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी, one-on-one basis for any papers relating to economics, you can WhatsApp your name and the topic on the number given below, 7738 100 508. Thank you.